Today we have visited Begum's garden and the remains of Rang Mahal, which was the residence and the precinct garden area for Khairun-Nisa. अब सबको मालूम कि ब्रिटिश रेसिडेंसी का जो दरबार हॉल है वो रेस्टोर हो गया, लोगों पब्लिक के वास्ते खुल गया, लेकिन इसका एक ऐसा हिस्सा भी है जो अभी भी पब्लिक की नज़र से गायब है. That is so much part of Hyderabad state's history and today part of Telangana's history and architectural heritage. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबगतुल्लाह ख़ान है और हम लोग दक्कन आर्काइव के साथ और इंटेक हैदराबाद के साथ हेरिटेज वॉक्स रखते हैं. आज का हफ्ते के दिन का हमारा वॉक था ब्रिटिश रेसिडेंसी और बेगम्स गार्डन जो है रेसिडेंसी कोटे वुमेंस कॉलेज के अंदर, उसके ऊपर फोकस करके हेरिटेज वॉक था. तो अब सबको मालूम कि ब्रिटिश रेसिडेंसी का जो दरबार हॉल है वो रेस्टोर हो गया, लोगों पब्लिक के वास्ते खुल गया, लेकिन इसका एक ऐसा हिस्सा भी है जो अभी भी पब्लिक की नज़र से गायब है. तो उसको है जो असरा हॉल है रेसिडेंसी वुमेंस कॉलेज के अंदर. असरा हॉल के बाजू एक ख़दीम ख़बरस्तान है, सेमेट्री है अंग्रेज़ों की, और उसके साथ साथ इसमें है बेगम्स गार्डन. बेगम्स गार्डन में रेसिडेंसी जो है मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, उसका एक छोटा मिनिएचर मॉडल बना के रखे है. और इसकी कहानी ये बोली जाती है कि जब सेकेंड ब्रिटिश रेसिडेंट टू हैदराबाद थे जेम्स एक्विलिस कर्कपैट्रिक, उन्होंने जब हैदराबाद को आए रेसिडेंट बन के, तो उनको एक हैदराबादी ख़ातून के साथ उनका निकाह हुआ और ख़ातून का नाम था खैरुन्निसा. और जब खैरुन्निसा की यहाँ पे शादी हो गई और वो इसमें रेसिडेंसी के पास रहने लगे, बेगम्स गार्डन बल्कि एक सेपरेट उनके वास्ते अलग गार्डन बनाने लगे जो पर्दे में था, और वो 4 बाग गार्डन के स्टाइल में बनाया गया था. और उसके अंदर एक छोटा सा मॉडल वैसे ये दरबार हॉल का बनाया गया था ताकि खैरुन्निसा पर्दे में रह के दरबार हॉल का नज़ारा देख सके, क्योंकि वो पर्दे से बाहर निकल के रेसिडेंसी में आ नहीं सकते थे. और इसके साथ साथ पीछे जो बाकी है अभी फ़िलहाल रंग महल के कुछ टुकड़े, वो टुकड़े भी हम देखे, जिसका अभी उस पर काम चालू है. इंशाल्लाह बेहतर नज़र आएगा आने वाले दिनों में. आपको एक नायाब चीज़ और एक देखने को मिलती कि एक बहुत ऊंची बुलंद कमान है यहाँ से साउथ की तरफ, ये दरबार हॉल के एकदम पीछे, जो पहले मूसा नदी को खुलती थी. उसका नाम है एम्प्रेस गेट, और ये एम्प्रेस विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे बनाया गया था. और उस पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको बैल के मुंडे नज़र आते हैं, बैल की खोपड़ियाँ जिसको अगर आप बोलेंगे स्कल्स है. और जो ब्रिटिश एम्पायर का जो कोट ऑफ आर्म्स था उनका, वो ऊपर आपको पूरा चुन्ने और मट्ठी में नज़र आएगा बने हुआ. उसके साथ साथ ऊपर लिखा हुआ है एम्प्रेस गेट, गेट का नाम है. और उसके ऊपर और एक ख़ास चीज़ ये है कि 27 सितंबर 1908 का फ्लड लेवल मार्कर भी इस पर अभी भी मौजूद है, जो कि 7 फीट की हाइट पे है. और लोहे के शीट मेटल के गेटा हैं जो उसको बुलेट प्रूफ गेटा लगाए थे रेसिडेंसी को 1857 के पहले अटैक के बाद, जो मौलवी अलाउद्दीन और तोरेबाज खान करे थे रेसिडेंसी के ऊपर. और जो दरबार हॉल के नीचे जो तय खाना था, वो तय खाने को बाद में मुख्तसर वक्त के बाद डंजन के तौर पे, जेल खाने के तौर पे तब्दील कर दिए थे. और उसमें कई सारे क्या बोलते आप प्रिजनर्स को, मुजरिमों को रखे थे कैद. और यहाँ पर ज़्यादा वक्त का से न रखते थे, लेकिन वो इंटेरोगेशन और टॉर्चर के वास्ते इसके अंदर ही आप डंजन्स का इस्तेमाल होता था. Good morning, I am Anuradha Reddy. I am co-convener in TAC Telangana and convener in TAC Hyderabad. Today we are very happy to be here as part of the INTAC Hyderabad and the Deccan Archive heritage walks that are conducted mostly on the weekends. It's a summer day, it's a summer morning. Behind me you see the very famous British residency that is so much part of Hyderabad state's history and today part of Telangana's history and architectural heritage.
We are actually standing right now in the Italian gardens that used to be part of this precinct. Centuries have gone by. This precinct changed hands from being a British headquarter. It then became the Osmania University Women's College, and today it is a full-fledged university for women in Hyderabad. With this building behind me is associated history, romance, sometimes sadness, because there have been incidents of various kinds. There have been attacks, attempted attacks on the British residency by Rohilla soldiers, Turebaz Khan being one of the famous, Maulvi Alauddin of Mecca Masjid also being part of this attack, which was unsuccessful. Turebaz Khan was killed and then he was hung outside this precinct where there is a memorial today. Maulvi Alauddin was taken away to Andamans to the prison there and died there, and he is buried over there. There is a romantic angle to this. The British resident and Khairun Nisa, who belonged to the Mir Alam family, they married, I imagine, with a lot of opposition from the British, because they did not really like fraternization with the Indians. It led to a lot of political complications. Today we have visited Begum's garden and the remains of Rang Mahal, which was the residence and the precinct garden area for Khairun Nisa, who, while being married to the British resident, did not come here, because we must remember that there was a Padda system at the time for women. So she had her own area to live in, and the British resident lived here, worked here. It was the official face of the British in Hyderabad state. The story is a bit tragic. The resident was transferred to Calcutta, and at a young age he passed away. Khairun Nisa's 2 children were taken away to England, and she was left abandoned here after he died. She went to Calcutta through various adventures to try and at least get some pension or something, but she failed. She came back to Hyderabad, and she was buried across the compound wall of present Women's College, what is today Osmania Medical College. I have seen the tomb that she was buried in, which was unfortunately demolished for a parking lot. Here we are seeing so many cases of losing history for parking lots. Is the automobile more important than people, their contribution and history? We recently had funds being given by the World Monuments Fund, so we were able to have this wonderful structure restored, and today we are able to visit and see it in somewhat of its former glory. Of course, my being in college here, studying here, gave it a whole new dimension, and I am very happy to be able to participate and show you my Hyderabad, my heritage, my Osmania University Women's College.